Hello students, welcome to Lucid Point. My name is Vikas Goyal. In this tutorial, we will study about LCM and HCF, and the objective of this tutorial are concept of factor and multiple, recapitulation of HCF and LCM, and problems based on HCF and LCM. So बने रहिए Lucid Point के साथ. Let us start the first objective of this tutorial, that is concept of factor and multiple. तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इस ट्यूटोरियल का वो है कंसेप्ट ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल. चलिए जानते हैं इसको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. लास्ट ट्यूटोरियल में आपने देखा कि कैसे एक कंपोजिट नंबर को हमने उसको एक्सप्रेस किया उसके प्राइम फैक्टर्स में. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 35, सो आई नो आई कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर इन द प्राइम फैक्टर्स. लेट अस do the prime factorization of 35. So हम इसको 5 से करेंगे divide and it will be 7 and now 7 and it will be 1. Okay, so we can write it as 5 multiplied by 7. 5 and 7 are the factors of 35. Although we have discussed these things in junior classes, but we need to understand again so that हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. राइट, सो फैक्टर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ नंबर, और इवन 35 अपना खुद का फैक्टर भी होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर. फैक्टर एक पार्ट भी हो सकता है और खुद वो एक नंबर भी हो सकता है. सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट फैक्टर इज नथिंग बट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ नंबर. Okay, so whenever you represent any composite number into its prime factors, so those prime factors are just the part and you can say simply factor. Now let us try to understand what is multiple. तो multiple को समझने की कोशिश करते हैं. अब आपने टेबल्स तो की हुई है ना जूनियर क्लासेस के अंदर, सो टेबल्स आई होप सबको याद होंगी. सो हम एक सिंपल सा टेबल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 का. राइट, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5. 5 multiplied by 2 is 10, like this. Okay, so 5 10, now next will be 15. Okay, so these numbers are multiples of 5. 5 itself a multiple, 10 is a multiple, 15, then 20, then 25. So these are the multiples. Okay, so usually multiple बड़े होते हैं हमेशा. Okay, मल्टीपल हमेशा बड़े ही मिलेंगे आपको और फैक्टर हमेशा आपको छोटा मिलेगा उस नंबर से. राइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल. ओके, सो नाउ विल मूव टू द ऑब्जेक्टिव 2 ऑफ दिस ट्यूटोरियल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड LCM and HCF in detail. In your junior classes you have studied this topic. Now in grade 10 let us revise this topic again. And to understand HCF and LCM, let us consider a problem. The problem is find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. Okay, so we all are aware about prime factorization. Let us do it very fast. So 6 का prime factorization जब हम करेंगे, so that will be 3 and simply 3 will be here and 1. So we can write 6 is a product of 2 and 3. 2 and 3 are the factors of 6. And the prime factorization of 20 we can find out very easily. It will be 10 and again we will just 2 here and 5 here. अब ये 5 से divide होगा, so 5 will be here. So we can write here that 20 is the product of 2 multiplied by 2 multiplied by 5. So these are the factors. Now अब हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर? वी हैव टू डिटर्मिन द LCM एंड द HCF. सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, कुछ स्टूडेंट्स को HCF में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो भूल चुके होते हैं कि हाउ टू डिटर्मिन HCF. तो हम HCF पहले निकालते हैं यहाँ पर. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो ये यूक्लिड डिवीजन की एप्लीकेशन भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? सो हाईएस्ट HCF में बेसिकली हमें करना क्या है, जो कॉमन फैक्टर है, देखिए इसकी फुल फॉर्म भी यही है. एक तो हाईएस्ट, एक तो नंबर वो बड़ा होना चाहिए और वो कॉमन होना चाहिए. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1. सो दिस इज कॉमन. 3 इज नॉट हेयर, 2 एक बार आ चुका है, 5 दोबारा नहीं आएगा. राइट,
So we can say that HCF of 6 and 20 is simply 2. एक और मेथड से हम इसको समझ सकते हैं HCF को. फॉर एग्जाम्पल हम 20 को, बड़े नंबर को हम अंदर ले लेते हैं, छोटे नंबर को हम बाहर लिख लेते हैं. सो 6 3s are 18 एंड द रिमाइंडर इज 2. सो ये यूक्लिड डिवीजन मेथड है हमारा, जो हमने किया था पीछे प्रॉब्लम्स में. सो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन सी देयर, एंड 3 पे गया तो 6. सो जो फाइनली डिवाइजर बचेगा दैट इज 2, and 2 is the HCF by this method as well. So as we can understand HCF very easily by this method, now we can consider about LCM, how to find the LCM, and we'll find out the relation between HCF and LCM. So let us find the LCM of 6 and 20. तो जैसे कि हमने 6 को रिप्रेजेंट किया, it was 2 multiplied by 3. So 2 raised to the power 1 and 3 raised to the power 1. सिमिलरली 20 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया और HCF हम लोगों ने निकाल लिया था इसका, HCF ऑफ 6 एंड 20 इट वाज ओनली 2. LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. देखिए दोनों में एक वर्ड तो कॉमन है, कॉमन. सो लेट अस फाइंड आउट LCM ऑफ 6 एंड 20. HCF एंड LCM में द डिफरेंस इज हियर वी नीड टू फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट एंड मल्टीपल. ओके, सो लीस्ट मीन्स सबसे छोटा और मल्टीपल मैंने आपको भी बताया था. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द LCM. LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर. सो इट इज द ग्रेटेस्ट पावर. फॉर एग्जाम्पल नाउ द 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर, अगर हम LCM निकालते हैं 6 और 20 का, सो द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2 इज 2. 3 की पावर यहाँ पे 1 है, बिकॉज 3 although it's not common but we will consider 3 because it is the prime factor. So every prime factor we have to take, and similarly 5. okay, 5 की पावर यहाँ पे 1 रहेगी. So the answer will be 4 multiplied by 3 multiplied by 5, that is equal to 60. So 60 will be the LCM of 6 and 20. okay. And one more concept which we should remember here, the product of 2 is equal to HCF of those two numbers and the LCM of two numbers. Okay, so here the numbers are 6 and 20, and if you just put here HCF was 2 and LCM was 60, so it will be 120 and it is equal to 120. ओके, सो दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा कि दो नंबर का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. सो नाउ लेट अस मूव टू ऑब्जेक्टिव 3, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन HCF एंड LCM, एंड द प्रॉब्लम हियर इज to find out the HCF and LCM of 404. So first we will find out the HCF by the prime factorization method. So we know how to calculate the prime factors of 96. So it will be like, then finally we'll get 3 here. 96 can be represented as 2 multiplied by 2. How many times 2 here? 1 2 3 4 5. okay, so 5 बार मैं यहाँ पर 2 को लिखता हूँ, and then finally here it will be 3. 2 raised to the power 5 multiplied by 3. Similarly अब मैं चाहूँगा यहाँ पे कि आप 404 का प्राइम फैक्टरेशन करो. इस वीडियो को पॉज करो एंड वेट फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स एंड देन इसको प्ले करो आप. राइट, सो आई होप आपने कर लिया होगा. सो 404 को हम लोग जब करेंगे, सो इट विल बी 202 and simple. It is so simple because 101 we will get, and 101 is a prime number, so it will not proceed further. So we will write here 404 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 101. okay, now अब हमें HCF निकालना है, and HCF मैंने आपको बताया था it is the highest common factor. So there are Euclid division method and there is a prime factorization method as well. बिकॉज अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन थ्रू दिस मेथड ओनली. सो द कॉमन नंबर इज 2 हियर, बट 2 की पावर जो है यहाँ पे
here it is 2 raised to the power 2 and 101, here the power of 2 is 5. so इन दोनों में से जो छोटी पावर है हम उसको देंगे 2 raised to the power 2, और 3 and 101 is not common, so that's why the HCF will become only 4. okay, now अब हमें LCM निकालना है, और अभी हमने लास्ट ऑब्जेक्टिव में देखा था कि product of two numbers, that means 96 multiplied by 404 should be equal to their HCF multiplied by their LCM. so अगर हमें LCM को निकालना है so we can divide by HCF. so हम लोग क्या करेंगे, 96 multiplied by 404 divide by HCF, और HCF की वैल्यू यहाँ पर 4 है, so it will be LCM, and when we calculate this, because it will be 101, and when we multiply this, so this will become 9646. अब हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF निकालने के लिए लगाया और हमने इसका LCM भी डिटरमाइन कर लिया. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. आप इसको दोबारा भी प्ले करके देख सकते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ ओनली. सो बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.